for Om. In. Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanahat Mrityurmokshe Yamamritam. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमयम्. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम नमो नारायणाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो वेंकटेशाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमो नारायणाय. ओम पवनसुताय नमः. ओम श्री हनुमते नमः. ओम जय श्री राम. राम सिया की जय. सिया राम की जय. जय. All 33 koti forms of our Dev Devata, all the spiritual texts which will be bring us wisdom, all the gurus, all the teachers, Mata Pita, for everyone, pranam. And the ultimate goal of human life is to get moksha or relieving from the birth cycle by uniting Atman with Brahman. Jai. So we'll start with bhavas and a little bit on Yoga Sutras again. Okay, Yoga Chitta Vritti Nirodha is from Patanjali. Patanjali Yoga Sutra. What is the number? Number of the sutra? 2.56. No, 1.2. Chapter 1, second one, 1.2. No worries. उतना परफेक्शन भी नहीं चाहिए. ओके, ज्यादा नियम ग्रह ज्यादा परफेक्शन क्या होगा, योगी का पाथ से हटा देगा. सो लिटिल बिट याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे. ओके, I have that problem. Perfection. ज्यादा परफेक्शन होने से हट जाएंगे योगा का लाइन से. That's why डिस्ट्रैक्ट हो I said जाएंगे. that's a problem, but I have. Okay, so it is the fundamental definition of yoga in Yoga Sutra 1.2. Meaning of Chitta Vritti. Mind fluctuations. Mind Right? fluctuations. Fluctuations. So what are the Chitta Vrittis? नहीं, सुमन मैम को बोलने दीजिए. सुमन मैम को बोलने दीजिए. कला मैम निद्रा सेकंड स्मृति, चांस. निद्रा स्मृति, प्रमाण विपर्याय विपर्याय विकल्प विकल्प निद्रा स्मृति. निद्रा स्मृति. Nirodha means
Nirodha means Control. control of senses. Yeah, vrittis. Yoga is achieved by, Practice and detachment. that is Abhyasa Vairagya. कल हम which sutra? Abhyasa Vairagya. Oh. 1.12. 1.12. इवन आई एम गेसिंग, मुझे भी याद नहीं है, देखना पड़ेगा एक बार, लेकिन मुझे जितना याद है 1.2 शायद। Okay, The other one was 1.2, right? Yeah, 1.2. क्यों ना, मैं कुछ एमसीक्यू देखा हूँ, पूछ लिए तो सडनली, सो बेटर टू जस्ट, हम लोग एक दिन में ना एग्जाम का पहले 1 वीक का प्रिपरेशन में याद नहीं रहेगा, अभी से ब्रेन को ट्रेन करते 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 यू विल सी इट इन एग्जाम। ओके, मैं कुछ गलत जगह चला गया था। जो main वाला, they will make a table or something so that it will be easy for remind. हो I'll make it. जस्ट वेट, प्रॉब्लम आ रहा है। I have just choose that yoga sutra. Okay. Next. Okay. I think the Abhyasa Vairagya Sutra is 1.12. yes. Abhyasa Vairagyam Tan Nirodha. Abhyasa Vairagyabhyam Tannirodha. So, control of breath will achieve through practice and detachment. Yoga is achieved by this one, 1.12. Oh, here it is written unnecessarily. I jumped to there. So, see, it's there. Abhyasa means Practice. practice, continuous effort, okay? Regular effort in yoga. Vairagya means Detachment. so freedom from desires with materialistic objects. Tada drishte sarupe avasthanam means true to ourselves, true to our inside, self-realization. Self-realization. Maitri means Friendship. वो ऑलरेडी हमें भावा में देखे थे पहले. Karuna means Compassion. Mudita means Joy in others. joy in other success. यहाँ है ही नहीं पूरा स्टेटमेंट. ओके, नीचे एक्सप्लेनेशन में. उपेक्षा मीन्स balance. नहीं, नॉट बैलेंस. Indifference. Ignorance. Ignore the negative things. So what will come? Indifference. ओके, बैलेंस. सुमन मैम आपका क्या है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया. No, answer is balance. Upeksha means ignore the negative things. Okay, then it's balance. Yes, correct. Equanimity towards negative. Shraddha means Faith. Virya means Effort. Shakti, energy or effort in practice. Smriti means Memory. Memory. retention of knowledge that we experienced in the past. Dharma bhava means Righteousness. righteousness, moral and ethical living. Yama niyama. Jnana bhava means Knowledge. wisdom, understanding. Vairagya bhava leads to Detachment. Detachment. Aishwarya bhava means Power.
because rest all are negative words only. Inner strength and mastery power. Bhavas are Mental attitudes. mental attitudes. Goal of Yoga Sutra and Bhavas, well-being. 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 So this is generic word. Okay, first one. Yoga Chitta Vritti Nirodha. So 1.2. Okay, so don't forget this again. Okay, 1.2 is because see, Patanjali Yoga Sutra is not speaking much on asana. In 2.46, they have telling something Sthiram Sukham Asanam. But it is like Yoga's Chitta Vritti Nirodha because they are more speaking on mental aspect. So definitely it's required. Mind. So mind constantly fluctuates, and the mental fluctuation, thought fluctuations are nothing but chitta vrittis. Okay, and yoga calming these fluctuations. Okay, result mental peace and clarity. Okay, Suman ma'am, what are the chitta bhumis? What was the? चित्त भूमिस मैं बताया था, आप लोग याद भी किए थे. एटलीस्ट मुझे दो बेस्ट वाला बता दीजिए, दो बेस्ट वेयर मेडिटेशन इज पॉसिबल. आप बताए थे मैम लास्ट टाइम. बताया तो था सर. ओके, ये अपना कला मैम, चित्त भूमिस क्या है? पांच Chitta, भूमिस. Muda, Chitta, चित्त Chitta, भूमिस. Muda, Vikshipta, Ekagra, Nirutha. करेक्ट. सो एकाग्र और निरोधा मैम लास्ट टाइम में बताया था, वो दो ही स्टेट अचीव करना है जिसमें सत्व ज्यादा होता है. ओके, एंड निरोधा स्टेट मतलब यू आर नो मोर डिस्ट्रक्टेड, द अल्टीमेट एम. लेकिन एकाग्र में भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन जो मैम बोले अभी विक्षिप्ता, डिस्ट्रक्टेड पोस्ट, वो सब में नहीं होता. पहला तीन क्या क्या बोले मैम? कैन यू रिपीट? Chitta, Muda, चित्ता, Mood. then मूढ़ा, Vikshipta, विक्षिप्ता, देन Ekagra, एकाग्र, देन and निरोधा. Nirutha. बहुत बढ़िया मैम, बेस्ट. Abhyasa Vairagyabhyam Tannirodha. So already we have spoke about this in the 1.12. So Abhyasa is regular effort, Vairagya is non-attachment, and both are essential for progress. Next, Tadadrashtuhu Sarupevasthanam 1.3. So when self is realized, when seer abides in his true nature, when seer rests in true nature, okay, it will be very easy, and that is nothing but mentally you are calm, and when you are calm, automatically things will help. So, yogic nature. So, it is Patanjali Yoga Sutra 1.3. Okay, next. Last class we have little bit read about this one, Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha and all. So, it is 1.33. So, friendliness, compassion, joy, equanimity, purify mind. Okay? So, these are mental hygiene, removes negative emotions. Next, Shraddha, Virya, Smriti, Samadhi. Samadhi, Prajna, Purvakaha, Itaresam. Means faith, effort, okay, memory, meditation lead to success. Now, concept of bhavas, inner qualities or attitude of mind. Your unit 3, 3.4. So, see, those are the qualities, characteristics, Karuna, Mudita, and all mental. But bhava wise, how our emotions should be there. First, four bhavas. First one, dharma. You have to be in the path of righteousness. Dharma. So, right conduct, moral life leads to harmony in society. So, balance. Yoga is that jnana, knowledge. So that is another bhava or pillar, true understanding, wisdom. Okay. So when your avidya is removed with knowledge or prajna, so automatically your yoga journey starts. Vairagya, detachment, free from desires, reduces stress and suffering. Aishwarya, divine power, inner strength. So it is like your divine power. आपका ऐश्वर्य प्रताप बढ़ेगा बोलते हैं, राइट? दैट इज ऑल डिवाइन पावर, इनर स्ट्रेंथ.
control our mind and senses, leads to confidence and mastery. So these are four bhavas. Four bhavas, So what were they? That Maitri, Karuna, four attitudes. four attitudes of yoga, four emotions also you can say. Okay. So relevance in well-being, okay, mental well-being, so reduces stress and anxiety, improves clarity and focus. So when you are in the path of dharma, okay, when you are in the path of this all characteristics of yoga, so your mental well-being happens and it improves clarity and focus. Physical well-being, balanced mind, healthy body. So Annamaya Kosa. Okay, Annamaya Kosa, it link. Emotional well-being. Okay, it is again in your Manamaya Kosa. Develops positivity, reduces anger and jealousy. Spiritual well-being. So this is overall the journey towards moksha. So leads to self-realization, inner peace and bliss. Bliss is your Anandamaya Kosa. Quick summary. Yoga Sutra 1.2 is talking about controlling mind or cessation of all the Chitta Vrittis. 1.12 Abhyasa Vairagya, practice detachment. 1.3 positive attitudes. By, what is that? Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha. Bhavas, four bhavas. Dharma, Jnana, Vairagya, Aishwarya. So in that way, you have to, four bhavas also you can note somewhere so that we can tell. I think we are good with this. Now, so today's topic wise you have covered, but I want to take you depth. Okay, L3, L4 level, but definitely it will help you because you have something only one portion, but I want to give you a overall human anatomy. So maybe today it will be little bit difficult, but later definitely you'll enjoy this. So directly lead to your yogic path. So we have 9 systems of human body. So what are the 9 systems? Skeletal system, muscular system, respiratory system, nervous system, cardiovascular system, endocrine system, excretory system, digestive system, and reproductive system. But what we know very popular, ma'am, without watching this slide, if you tell which all systems we know? Respiratory we know. Okay. We Digestive know reproductive system, digestive system we know. Okay. skeletal Muscular also. system, Muscular we know, skeleton we know. skeleton. Okay. So endocrine and all little bit we'll see. So out of this 9, right, we know almost 5 6. Okay, now we'll go little bit more. Skeletal system, muscular system, respiratory system, nervous system. Yes, parasympathetic and sympathetic nervous system and all are we know. Cardiovascular system, endocrine system, excretory system, digestive system, reproductive system. Now we'll go into the little bit depth. Okay, so the human body shows a unique organizational unity that aids in carrying out activities in a synchronized and integrated manner. So the smallest unit in the body, living unit, is cell. A group of cells with a similar structure and function is called a tissue. Okay, a group of tissues arranged together to perform similar functions is an organ. And a group of organs that contribute to specific function within the body is system. So you can see
This is the individual cell, the smallest unit in the living unit. Just wait, I'm getting a call from them. Okay, next. So the living unit, the smallest one. Okay, next. मैम ब्रेन में मैं बोला था स्मॉलेस्ट, कला मैम कौन सा है इन ब्रेन, द स्मॉलेस्ट यूनिट? That neuron. न्यूरॉन, बहुत बढ़िया. ओके, सो सेल इज द यूनिट smallest one, then tissue, after tissue it is organ, after organ system. So merging of multiple cells is tissue, and when tissues combined common functionality will merge, it will be organ, then total organ system. Okay. Next. Next, skeletal system. Okay, skeletal system consists of bones, ligaments, tendons. Okay, so बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा पढ़ लीजिए, क्यों ना, we have almost good knowledge कि where it is impacting, प्राणायाम कहाँ लिंक हो रहा है, आसन कहाँ प्राणायाम, आसनास कहाँ लिंक हो रहा है, डिसीज रिलेटेड आसना क्या है, तो in that it will give a add on. Okay, ligaments connects bones to other bones. Okay, so tendons connects bone to other muscle, यहाँ tendons. Okay, next, cartilage are found in the joints and provide cushioning to the bones. So normal joint, okay, in that, see this is the cartilage. So जैसे घुटनों का बीच, ओके, ये अगर घिस गया आपको फिर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सब करके वो डालते हैं. एंड सपोज दोनों जॉइंट है, ओके, उसमें अगर घिस गया, उसको आर्थेटिस भी बोलते हैं, कुछ लोग ऑस्टियो आर्थेटिस भी बोलते हैं, तो घिस गया तो पेन होगा. बोन्स एंड रब टुगेदर, सो रब होते होते खत्म हो जाते. नेक्स्ट, लिगामेंट्स जो बोला, कनेक्ट बोन्स टू अदर बोन्स. सो यहाँ यहाँ ligaments bind bone to bone, and joint capsule, फिंगर के बीच भी joint capsules है. नेक्स्ट, स्केलेटल सिस्टम. सो ये बहुत पूछते हैं कि एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितना बोन है, एक्सियल स्केलेटन में कितना है, तो टोटल 206 बोन्स फॉर एडल्ट्स. आउट ऑफ दैट एक्सियल स्केलेटन इज 80 बोन्स एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन इज 126 बोन. तो आप बोलोगे सर थोड़ा नया लग रहा है टर्म, तो कुछ नहीं, एक्सियल इज लाइक आपका कमर से ऊपर वाला, एंड एपेंडिकुलर इज स्केलेटन इज उसके नीचे वाला. ओके, सो पेल्विक, ओके, टांगों का वो सब नीचे आ जाता है. सो सी हियर, स्कल आपका सर जो है, ओके, ये तो वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज योर स्पाइन. ओके, रिब का हड्डी को ये लोग बोल रहे हैं थोरासिस कैज, क्योंकि वो एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करता है. सो दिस ऑल आर एक्सियल स्केलेटन. ओके, बोन्स ऑफ द हेड, नेक, चेस्ट एंड स्पाइन.
Okay, this all are coming how much? 80. Okay, next. इतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे, लेकिन एक रखना, क्योंकि डे बाय डे टफनेस बढ़ा दे रहे हैं, बिकॉज कंपटीशन इज मोर, तो थोड़ा देख लेते हैं. शोल्डर ग्रिडल. ओके, सो ए शोल्डर ग्रिडल यहाँ. नेक्स्ट, अपर लिम्स. ओके, जो ए वाला. ओके, दिस वन ऑल अपर लिम्स. पेल्विक. ओके, जो पेल्विक पेल्विक हम इतना बोलते हैं, तो स्पाइन के बाद और आपके मतलब हिप एरिया में वो जो बैलेंस करता है, आपका बॉडी को पूरा होल्ड करता है, दैट इज योर पेल्विक ग्रिडल. लोअर लिम्स तो आपको पता है, जांघें और जो आपका ये वाला हैमस्ट्रिंग्स एंड ये वाला जो है आपका सेकंड काफ मसल या लेग्स. तो बोन्स ऑफ द आर्म्स, लेग्स, हैंड एंड फीट, पेल्विक ग्रिडल एंड पेक्टोरल ग्रिडल. ओके, सो एपेंडिकुलर में मेरा थोड़ा शायद अंडरस्टैंडिंग गलत हुआ, आर्म्स भी उसमें ही आ जाएगा. So that's why it is 126. नेक्स्ट, वर्टिकल कॉलम. ओके, जो स्पाइन, उसमें हम जो बोलते हैं ना, लोअर स्पाइन L4 L5 डिस्क स्लिपेज L3, दैट ऑल आर लुम्बार. ओके, देन T1 to T30 T12, दोज आर थोरासिस. देन सर्वाइकल पेन आता है. ओके, नेक रोटेशन, ग्रीवा शक्ति विकास का क्रिया बहुत टफ होता है बोलते हैं, सो दैट इज नथिंग बट द सर्वाइकल. ओके, सो C1 to C7. एंड सैक्रल इज पूरा आपका नीचे, S1 S2 S3 S4 S5, और कोक्रिक्स मतलब जो मूलाधार चक्र का जगह है. ओके, दैट इज स्पाइनल का अंदर, इसके अंदर सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना लेयर्स रहते हैं जिसमें ब्रह्म नाड़ी पास होता है. ओके, सो इंटर वर्टिब्रल डिस्क. सो दोनों जॉइंट के अंदर ए अगर निकल गया तो आपको पेन स्टार्ट हो जाता है. तो उसीलिए बोलते हैं long time sitting more than 2 hours is a slow poison or giving smoke to your body equivalent to 41 cigarettes, कुछ बोलते हैं एक कैजुअल. बट आई से, अगर आप ताड़ासन कर रहे हो, अगर आप स्ट्रेचेस कर रहे हो, इसमें आपको नहीं होगा. दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट एंड यू हैव टू, कुछ कुछ टाइम में आपको बेंडिंग एओ क्यों करना चाहिए, ट्रंक मूवमेंट वगैरह क्यों करना चाहिए, टू डू दिस. नेक्स्ट, so central axis of the skeleton is vertebral column, supports the trunk, provides attachment to the muscle, posture and movement, protects the spinal cord, formed of 33 vertebrae. Okay, ये सबको अगर गिन देंगे 7 plus 12 plus 5 plus और 5 5 5 10 10 and 12 22 22 plus 7 29, और 5 कहाँ रह गए. ओके, कोई इनर साइड में होगा, बट it's saying total 33 vertebrals. So 7 cervicals already we can see in the figure. Okay, 12 thoraces that we can see, T1 to T12. Then lumbar bone, lumbar is L1 to L5, lower spine. Then 5 sacral, so 5 is here in the blue color. Then 4 coccygeal. Okay, coccygeal 4, so इसमें कहीं है, so I cannot see. So this all combinedly comes to 33. So the vertebral canal encloses the spinal cord. Okay, so this is the vertebral body, और उसमें क्या होता है, the canal encloses the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड को पूरा कवर करके, एनक्लोज करके रखता है दिस वर्टिब्रल बॉडी. नेक्स्ट, स्केलेटल सिस्टम. सो स्केलेटल सिस्टम में क्या है, अगर आप टोटल देख रहे हो, टोटल स्केलेटल सिस्टम आ गया आपका पूरा होल बॉडी का. यू कैन लुक लेटर, आई कैन शेयर दिस टू विथ यू. सो मेन हमें थोड़ा पता होना चाहिए, ये वाला पेल्विस. ओके, दिस इज स्पाइन. ओके, दिस इज सैक्रम यहाँ से, और ये जो फूड पाइप को एसोफेगस बोलते हैं, लेकिन इसमें नहीं आता, दैट विल कम इनसाइड. नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ स्केलेटल. gives a framework for the body, protects internal organs, because this all right, it will support your respiratory system totally, along with the muscles helps in movement of body. So muscles definitely helps, produces blood cells, stores and releases minerals and fat. So this question you have to remember, femur, I think it came for someone in the viva. Which bone is the strongest in the human body? So the thigh bone. Okay, femur is the longest, heaviest and strongest bone, thigh bone.
steps located in the ear. कान के अंदर ना you'll get This every time this ques- every this question smallest thing. comes this question comes in every exam, degree, pre-degree, sub. Yes, yes. And even I think this was asked to someone. Steps I think I have received, I cannot remember. So जब भी small आएगा ना automatically it will come to bone हो muscle हो सब कान के अंदर ही रहेगा. Okay, and बाहर का अलग चीज. Next, types of muscles. Okay, skeletal muscles. Okay, then smooth muscles, cardiac muscle. Cardiac मतलब chest area, cardiac arrest होता है, cardiac बोलते हैं, that is this area. Skeletal muscle तो आपको पता है कि जैसे मेरा हैंड है, जो मसल्स अभी कवर किया है मेरे बोन को, जॉइंट्स को, तो जस्ट स्केलेटल मसल. कार्डियक मसल तो हार्ट है. नेक्स्ट स्मूथ मसल, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, दैट ऑल आर स्मूथ. क्योंकि यू कैनॉट मूव एट योर विल, आपको नौली क्रिया करना पड़ेगा, कपाल भाती करना पड़ेगा, तभी जाके स्मूथ मसल में मूवमेंट होगा. बट स्केलेटल आप वॉक करोगे तो मूवमेंट हो जाएगा. कार्डियक मसल हार्ट में. ओके, नेक्स्ट muscular system. Okay, the largest muscle present in the human body is gluteus maximus. Okay, so जो आपका यहाँ है gluteus muscle. Okay, pelvis area को और इसको कवर कर रहे हैं, right, abdomen. So that is the maximum. And the smallest one found are present in the inner ear. कान के अंदर एक मसल होता है, that is the smallest muscle found in the body. So in total body weight, 40% of weight is muscle. So the heart is the largest hard working muscle of the body. Heart बन तो खत्म. The muscle contraction produces most of the heat in the body. Okay, muscle contraction से आपका body में heat produce होता है. So the strongest muscle according to its weight is the master in the jaw. Smooth muscles are found in the reproductive system, urinary, abdomen area, are found in the gastrointestinal, reproductive, urinary, vascular, and respiratory system. Cardiac muscles are found in the heart. So cardiac arrest, cardiologist and all will say especially for heart. Muscular system. Muscle tissues can contract and expand, which enable the body to move and function. So definitely muscles and muscle tissues have great help in us. Otherwise you cannot move only. Along with bones, they help in the movement of the body. Okay, bone का movement के साथ body का movement भी possible due to muscle tissues. What does lack of exercise do your muscles? Can lose muscle strength and endurance. So बहुत जरूरी है आसन प्राणायाम और स्ट्रेचिंग, वॉकिंग मूवमेंट, ऐसा बहुत जरूरी है फॉर मसल. नेक्स्ट, बोन्स में गेट वीकर. ओके, नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म में भी अफेक्टेड. इम्यून सिस्टम में नॉट वर्क एज वेल बिकॉज इट विल बी वीक इफ यू आर नॉट डूइंग एक्सरसाइजेस. नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम. हाँ, मेरा क्वेश्चन ये आया था, ट्रैचिया. ट्रैचिया इज फ्रॉम व्हिच सिस्टम? सो ये बहुत आता है ट्रैचिया. ओके, दिस इज ट्रैचिया. कहाँ? गले के नीचे. ओके, सो इट कंसिस्ट ऑफ नोज, लैरिक्स, साउंड बॉक्स, दिस वन लैरिक्स, जहां से आवाज आता है, विशुद्धि चक्र के पास है. नेक्स्ट, नेसल कैविटी एंड फेर्निक्स. ओके, एंड इसमें ट्रैची में अगेन ब्रोंची, ब्रोंचियल्स एंड एल्वोली तीनों आते हैं. तो द स्मॉलर वन इज एल्वोली. ओके, ब्रोंची थोड़ा मोटा वाला, बड़ा, जिससे एल्वोली निकला है. एंड उसका जो जंक्शन है जहां सेपरेट हुआ है, दोज आर ब्रोंचियल्स. ओके, सो lungs have a largest surface 540 square feet to 810 square feet for the gas exchange to place. Okay, so lungs is the place where your gas exchange will happen. Okay, ये बता सकते हैं बाइल कहाँ से जनरेट होता है? बाइल Pancreas. नहीं, Liver, पैनक्रियास से liver, तो sorry, liver. लिवर से बाइल, करेक्ट. बिकॉज पैनक्रियास से आपका आता है ग्लूकोज, ग्लूकिन एंड Insulin. इंसुलिन, दोनों आपका पैनक्रियास से जनरेट होता है. सो हम मंडू का आसन उसी लिए करते हैं टू एक्टिवेट दैट. ओके, नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम. एयर फ्रॉम आउटसाइड इज टेकन ड्यूरिंग इनहेलेशन. तो O2 आपका अंदर चला जाता है. डायफ्राग्राम एंड रिब हेल्प्स इन द प्रोसेस. ओके, सो ये जगह को डायफ्राग्राम बोलते हैं, डायफ्राग्राम. ओके, सो
जब आप ब्रीद इन करते हो एक्सपेंड होता है, एंड व्हेन यू आर ब्रीदिंग आउट डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है. It's सो diaphragm. There is no G in that. It's डायफ्राम diaphragm. बोलते हो ना, That's डायफ्राम. no G. I don't think there is no G in that. नहीं नहीं, करेक्ट, यू आर राइट, डायफ्राम. Diaphragm. Yeah, diaphragm actually, yes. So even if G is there, it is silent, right ma'am, Suman ma'am? Okay. Next, diaphragm and ribs helps in process. Exchange of gases takes place in alveoli. Alveoli is this one. Previous picture I have shown, right? See this one. The smallest one is ends are alveoli. Okay. So exchange of gases takes place in the end of alveoli, and the oxygen enters to the blood streams and carbon dioxide goes out during the exhalation. Other functions regulates body temperatures, helps in sense of smell. Next, one of the important chapter. Okay, मैं तो बाकी सब casually complete किया, but nervous system you'll get so many questions. Okay, one central nervous system CNS, one is peripheral nervous system PNS, and one is autonomous nervous system. So CNS आपका central, peripheral nervous system is, और parasympathetic nervous system जो है आपका योग में activate होता है. So that's why it's more into emotions and all. Okay, so central nervous system simple, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्पाइन से जो नेक्स्ट जुड़े हैं आगे, सो दैट ऑल आर कमिंग अंडर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. लाइक आपका कंप्यूटर में पेरिफेरल डिवाइस मतलब क्या है, माउस, कीबोर्ड एंड ऑल जो कनेक्ट होता है सीपीयू से. सो सेम वे हियर आल्सो it like passes the electric signals. कौन सा, neurons. So basic unit of nervous system is neurons. So nerves that branch off from the brain and spinal cord to enter body. So the neurons carry information in the form of chemicals or electrical signals. Autonomous nervous system controls the involutionary actions like heartbeat and digestion. Okay. Functions control all other systems, receives, processes and transmits nerve impulses throughout the body. Next, cardiovascular system. Okay, so consist of heart, arteries. Arteries क्या करता है, it can from veins क्या करता है उसका उल्टा, brings blood back to heart. Okay, blood. So pulmonary circulation क्या है, transports deoxygenated blood from the right side of the heart, okay, to the lungs and picks up oxygen and returns to the left side of the heart. But systematic circulation, highly oxygenated blood from the left side of the heart is carried to the tissues of the body and brings the deoxygenated blood back to the right side of the heart. So the heart pumps around 100 gallons of blood through the body each hour. Okay, the vast system of blood vessels is over 60,000 miles long. Okay, so gallon मतलब कितना होता है मैम, पता है, थोड़ा बहुत सुने हैं गैलन? क्योंकि यूएस में ना मैं सुना था ये बहुत, गैलन गैलन एंड ऑल, व्हेन विल पुट पेट्रोल एंड ऑल, राइट, दे विल से सर 1 gallon 2 gallon हाउ मच. सो इट्स लाइक 3.6 या 3.4 को 1 gallon बोलते. आई थिंक हमारा जो 3.5 लीटर्स है अराउंड, दैट इज क्लोज टू 1 gallon. लेकिन थोड़ा गूगल कर सकते हैं क्या कला मैम या सुमन मैम, गूगल 1 gallon कितना है, क्लोज, लेस देन 4 liters. 3.78 liters. ओके 3.78 लीटर्स वही, तो 4 से कम है, दैट इज कॉल्ड गैलन. एंड यूएस में ना इवन पेट्रोल एंड ऑल को दिल से गैस, सो गिव मी 1 gallon गैस, 2 gallon गैस, उसके हिसाब से बिलिंग होता है. सो देयर इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गैलन. नेक्स्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. arteries carries oxygen and nutrients to the all parts of the body. Arteries, so arteries and vein में बहुत confusion होता है. कला मैम को पता होगा because she is from that field. सुमन मैम आपको ध्यान देना. लेकिन veins क्या है, it's carry back the CO2 and waste into the heart. So arteries carry Impure oxygen. veins carry impure blood and arteries carry pure blood to the whole body. Yes, and impure blood is pumped into lungs to take the oxygen and remove carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा तो विल ब्रीथ आउट. द व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस that enter the body. It also carry antibodies which gives immunity to the body. Yes.
It also regulates many internal conditions like a stable body temperature. Okay, थोड़ा इसमें भी देख लीजिए. Okay, lungs. Okay, this is heart. Okay, stomach, aorta. Okay, this middle pipe. Then this adjacent one is the spleen, and these are the large intestine, small intestines, and all. Capillary bed. Okay, back of your stomach. Portal vein. So maybe this small blue one. Liver. Okay, after liver it is posterior vena cava, and then anterior vena cava. Next, endocrine system. Okay, so I think this endocrine is more for hormones. Okay, generation of hormones. So a group of glands which produces hormones that regulates the normal functioning of the other systems. So pituitary gland यहाँ है, जहां से मैं बोल रहा था मेलाटोनिन जनरेट होता है, भ्रामरी में जहां हमिंग बी साउंड का कंपन होता है ना, दैट ऑल आर पिट्यूटरी ग्लैंड. ब्रेन, पिनियल ग्लैंड. ओके, पिनियल ग्लैंड यहाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड इसके पास ये, और ऊपर वाला जो है हाइपोथैलेमस. ओके, नेक्स्ट दिस वन थायराइड ग्लैंड. ओके, और पाराथायराइड ग्लैंड्स जो विशुद्धि चक्र में है. नेक्स्ट थाइमस हियर. नेक्स्ट ओवरी फॉर फीमेल. Testicle is from male. This is adrenal gland. Then this one is called placenta during pregnancy, right? So this is one. So pituitary gland brain, pineal gland brain, thyroid neck region, parathyroid neck region, thymus between the lungs, pancreas as you told, right? It is behind stomach for the diabetic stuff and all, right? So insulin and that glyconin or something, that all it will come out. Adrenal, top of the kidneys, ovaries, and so reproductive organs. So functions. Hormones are discharged in the blood stem and reach all cells. Regulates many functions like growth, metabolism, sexual development, etc. So one is pituitary gland, brain, master gland. Pineal gland, brain. Melatonin, sleep hormone is generated by pineal gland. Thyroid, growth and metabolism. Parathyroid, bone health. Thymus, okay, immune system between the lungs. Pancreas, insulin, and sorry, the second one is glucagon. Okay, glucagon and insulin. So these are behind the stomach, pancreas. Then adrenal, top of the kidneys. So it will fight and flight mode. So adrenaline. Ovaries and testes, reproductive organs. So estrogen for female and testosterone is for male. Next, excretory system. सो थोड़ा टफ लगेगा, बट एक चीज आप याद रख लीजिए, क्योंकि आई थिंक आई गॉट दिस क्वेश्चन, मैं गलत कर दिया था. नेफ्रॉन्स, न्यूरॉन्स को मैं सिलेक्ट कर दिया. न्यूरॉन इज एक्चुअली इन द ब्रेन एंड ऑल, बट यहाँ नेफ्रॉन आता है. सो एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें कंसिस्ट Neuron ऑफ nervous system. हाँ, नर्वस में आ जाता है, लेकिन इस आता है नेफ्रॉन से एक्चुअली. किडनीज, ureters, urinary bladder, urethra. So nephrons are the functional unit of kidneys. Each kidney has millions of nephrons, and all the blood in our body is filtered 400 times through the kidneys every day. Okay, तो nephrons को थोड़ा याद रखिए. थोड़ा फिगर देख लेते हैं. सी, दो कलर में है. Blue one renal vein, okay, and the red one is renal artery. Okay, arteria vena cava, adrenal gland, kidney के ऊपर. Next, this one, ureters. So that is connecting to your bladder, urinary bladder. And this one is bladder, where आपका urine या गंदगी रहता है वो बाहर निकल जाता है. And the top of that is urethra. Next, digestive system. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. क्यों? इसमें आपको बहुत क्वेश्चन आ जाता है. तो सबसे पहले इसोफेगस, फूड पाइप. नेक्स्ट, सैलिवरी ग्लैंड्स. ओके, माउथ से डाइजेशन शुरू होता है, सालेवा मिल जाता है, देन इट विल टेक द पाथ. टंग भी इन्वॉल्व होता है, टंग ऑल्सो इन्वॉल्व बिकॉज वो हेल्प करता है आपका टेस्ट एंड ऑल के लिए. देन सैलिवरी ग्लैंड से टंग में आपका सलाइवा आता है. देन लिवर, then stomach, then gallbladder, this one, then pancreas, okay, then large intestine, then small intestine, anus region where stool passes, okay, rectum, okay, here,
अपेंडिक्स हाइड्रिक्स जो होता है, अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन का एक एंड, देन स्मॉल इंटेस्टाइन इनसाइड, देन गैल ब्लैडर। सो आप जो सट कर्म करते हो ना, ये सब जगह को बहुत क्लीन करने के लिए ही वो एब्डोमिनल चर्निंग, बहुत सारे गंदगी रहता है तो एनिमा करवाते हैं एनस से, जो बस्ती और धोती करते हैं ना, सो एब्डोमेन लेवल से निकालते हैं, तो दैट ऑल इज Kunjal Kriya हेल्पफुल। is also हाँ, digestive system. कुंजल क्रिया भी वही है, गंदगी और बहुत बेकार चीजें सब निकालता है जो स्टॉक होकर रह गया, इवन इनडाइजेस्टेड फूड ना यहाँ रहता है। सो व्हेन यू आर डूइंग दैट नौली क्रिया, कपाल भारती एंड ऑल, इसमें तो इच्छा से मूवमेंट नहीं कर सकते, you can walk, you can move, but this all you have to do that cleansing method, especially churning, abdomen churning, बंधास, तीनों बंधा अगर लगाएंगे डेफिनेटली वो भी इस एरिया में प्रेशर करके क्लीन करेगा। एंड और एक चीज मैं कर रहा था, अग्नि ब्रीदिंग आउट एंड एब्डोमिनल मूवमेंट, वो भी इस जगह को मूवमेंट देता है। सो व्हाट ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम कंसेप्ट, स्टार्ट विथ माउथ, टीथ, या टीथ भी खाने को ब्रेक करने के लिए हेल्प करता है, देन टंग, ओके, देन सलाइवा वगैरह टंग से भी हेल्प करता है, देन फेरिनिक्स, फेरिनिक्स कहाँ गए, पिक्चर में नहीं है, आफ्टर फेरिनिक्स इट्स फूड फाइव, सो आई बिलीव फेरिनिक्स इज हियर, मतलब गले के नीचे। नेक्स्ट esophagus, food pipe, then stomach, then small intestine, then large intestine, then rectum, liver, gallbladder, pancreas. Digestive system, विलाई याद रखना, पूछेंगे बार बार। सो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गेस्ट पार्ट, 22 feet ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम मैनस पता चल गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन पता, तो which is observed that is called villi, okay, inside intestine एक छोटा सा, ओके, ऐसे ऐसे निकलता है, उसको क्या बोल सकते हैं, एक प्रोजेक्शन, एक छोटा सा, Hair like structure. हाँ, हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, एक छोटा सा ये आता है मांसपेशी की तरह। सो दी वॉल्स हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, व्हिच हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग योर विटामिन और फूड का जो ये vitamins. Functions: digestion by breaking the food into the carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals. These are required for growth, energy, repair. And villi से absorption of nutrients and removal of waste, सब absorb होने के बाद बाकी वेस्ट एनएस में और ब्लैडर में निकल जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वंश वृद्धि के लिए, सो मेल फीमेल, ovaries, testes, you know already, reproductive organs, functions: to produce egg and sperm cells, to transport and sustain these, to nurture the developing offspring, to produce hormones. So male organs, anus, sorry, female organs, okay, for that it is ovaries, okay. I think this much overall. I think थोड़ा डेप्थ हो गया, बट डेफिनेटली इट विल हेल्प यू, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपको क्वेश्चंस आएगा, ओके। सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ओके। क्वेश्चन ऐसा आया था, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ब्रीदिंग कहाँ से होता है इन नर्वस सिस्टम, व्हिच पार्ट विल टेक केयर ऑफ योर हार्ट बीट और डाइजेशन वगैरह जो ऑफलाइन होता है, कौन करता है? यू आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व, खाना खाने के बाद 4 घंटा डाइजेस्ट होता है ना, हु विल इन्वॉल्व फॉर दैट, या हार्ट बीट वगैरह कौन टेक केयर करता है? एएनएस, Digestion ऑटोमेटिक is नर्वस सिस्टम, ऑटो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, इमोशन एंड बाकी के लिए पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके। और अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो जिम में वगैरह, कहाँ टच होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस, एसएनएस, पीएनएस, एएनएस, इतना अगर जान ले, मोर देन एनफ। क्लोज करते हैं आज के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
Om Shanti Shanti Shanti. Asuto ma Sadgamaya Tamaso ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritagamayam. Hari Om. Mata, Pita, Guru, Atiti, Panchabhut, sabko pranam. And the ultimate goal of human birth is getting moksha. For that, we have to do this kama karma, bhakti yoga, yama, niyama, and in the path of dharma. Righteousness, Jai Guru. Ma'am, any questions?